हेलो गाइस एंड वेलकम टू नॉस्ट्रेला वेल्थ वेयर वी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस एंड मनी मैनेजमेंट, जहां हम पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट की बातें करते हैं। सो आज हम देखेंगे द थर्ड पर्सनल फाइनेंस रूल आउट ऑफ द 9 पर्सनल फाइनेंस रूल दैट यू शुड बी नोइंग एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ वेन एवर यू आर मैनेजिंग योर ओन पर्सनल फाइनेंसेस। ठीक है, सो आज हम थर्ड रूल कवर करेंगे। व्हाट इज दैट थर्ड रूल? थर्ड रूल टॉक्स अबाउट द विड्रॉवल रूल एंड थर्ड रूल टॉक्स अबाउट द रिटायरमेंट रूल। सो ये 4% विड्रॉवल रूल है क्या? 4% withdrawal rule talks more about retirement, correct? So if I have a corpus today and if I want to retire, I want to be financially free, there has to be certain corpus from which I have to withdraw some certain amount of money to meet my day-to-day expenses. कहीं ना कहीं से तो पैसे आने चाहिए because expenses तो fix है, correct? So that bills which are generating every month, that has to be paid off. Correct. So that money has to come from somewhere. So if I today want to retire, what is the corpus that I require? And from that corpus, that 4% withdrawal has to be done. Supposingly, if we take an example, अगर मेरी महीने की आमदनी 1 लाख रुपए है, तो सालाना मेरी इनकम हो गई 12 लाख रुपए. If I want to retire today, that 12 lakh rupees has to come from somewhere to meet my day-to-day expenses, to pay off all the bills, correct? So that withdrawal, whichever is coming, should not be more than 4% of my corpus, of the from the corpus, correct? So if I am retiring today, if I have a corpus of 1 crore, if I withdraw 4% from that, the withdrawal is only 4 lakh rupees. So am I in a situation to retire today? नो. सो मैं आज रिटायर नहीं हो पाऊंगा. सो मेरा कॉर्पस आज की तारीख में कितना होना चाहिए? विच कम्स टू 3 करोड़. फ्रॉम दैट इफ माई विड्रॉवल रोल इज 4%, then it matches my income and expenses as of today. So 4% becomes my thumb rule that I should not withdraw beyond 4%. अगर मैं 1 करोड़ में से 12 लाख रुपए विड्रॉ करने चालू कर दूँ, so my capital or my corpus, whichever is there, will finish off in the coming 8 to 10 years. मेरा पैसा जो कॉर्पस है, जो मेरी किटी मैंने बनाई हुई है इन्वेस्टमेंट की, ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 years it will be finished off if my withdrawal rate is high. So I have to have a very conservative rate of withdrawal whenever we are talking about withdrawing your money from your investments. So if I have a corpus of 3 करोड़, उसमें से फिर सिर्फ 4% विड्रॉ करता हूँ, तो मेरा क्राइटेरिया मैच हो जाता है. जो मेरी 12 लाख की इनकम है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर माई एक्सपेंसिस, माई डे टू डे एक्सपेंसिस टू बी कवर्ड, दैट इज बीइंग मैच्ड. So 4% withdrawal rule becomes very important if you want to retire early, if you want to be at an early stage of life, right? और एट योर अभी आप 60 साल के होना चाहते हो तब रिटायर होना, तब भी ये रूल एप्लीकेबल है दैट यू शुड नॉट विड्रॉ more than 4% of the corpus of the kitty, whatever you are having in your asset. That corpus can be anything. It can be your fixed income, it can be your equity, it can be real estate, it can be gold, anything. But it should not be more than 4%, so that you have a conservative rate of withdrawal. आपको हर महीने पैसे आपको आप कर रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट से, so that your capital is also not disturbed and you will withdraw money over a long stretch of time for maybe next 25 to 30 years. आप अच्छे से उसमें से पैसे विड्रॉ करते रह सकते हैं without your capital getting eroded, correct? So this is the third personal finance rule, the 4% withdrawal rule. In the next video we will be coming up with the fourth personal finance rule, so stay tuned for the next video. Thank you so much guys for listening to me. Signing off, Mahindra Rao. Bye bye.